0 plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift-off of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S-200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB-based solid propellant. 204.5 tons in each strap-on. Close to 2 tons of propellant being burnt each second. S-200 स्टेप-ऑन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart from the strap-ons, the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated of hypergolic earth storable liquid propellants UH-25 and N-204. Now the S-200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार इस यान से S-200 स्टेप-ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अब यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। L110 stage performance normal. The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload fairing separated. जी हाँ, पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। We are 220 seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second. That is 250 kilometers every minute. L110 stage performance normal. LVM-3 M4 रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। N-204 तथा UH-25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। Stage ignition is authorized. अगला चरण C-25 का प्रज्वलन
भावी है। plus 5 minutes. L1 stage thrust cut off and separated to C25 ignition command. 25 ignition confirmed. That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन, और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। तृतीय चरण C25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य हैं। 118 kilonewtons thrust in vacuum is what this stage develops with its 28.6 tons propellant combination of liquid hydrogen and liquid oxygen. Present altitude Stage is close. performance normal. तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C25। यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है। इस चरण में 186 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब 640 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 446 सेकंड के करीब होता है। Currently, the rocket is at an altitude of 210 kilometers. Plus 7 minutes. While there is no much variation in altitude, this stage will add to the relative velocity immensely. Cryo stage performance अब आपको normal. के बारे में जानकारी देते हैं। लैंडर मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं। India's prestigious lunar landing spacecraft Chandrayaan 3 moving closer to its intended injection spot in the orbit. The propulsion module provides propulsion for earthbound maneuvers, translunar injection, and moonbound orbits. It also has a payload to study the spectral and polarimetric measurements of Earth and lunar orbit. The abbreviated name of the payload is SHAPE. Among the payloads of the lander module, the following are included. A Langmuir probe called Rambha to measure the near-surface plasma density, that is the density of ions and electrons, and its changes with time. The second payload is Chandra's Surface Thermophysical Experiment, or CHASTE, to measure thermal properties of lunar surface near polar regions. To measure the seismicity around the landing site and delineating the structure of the lunar crust and mantle, payload ILSA is there. The rover, after its descent, will further the scientific study objectives through its own payloads. For better understanding of chemical and mineralogical composition of lunar surface, LIBS, or laser-induced breakdown spectroscope, is included. Another payload is the alpha particle X-ray spectrometer. जी हाँ, लैंडर मॉड्यूल में 3 पेलोड हैं, रोवर में 2 और प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1 पेलोड भेजा गया है। चंद्रयान 3 के स्वदेशी लैंडर और रोवर में नितभारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह अंतर्ग्रही मिशन के लिए भी आवश्यक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे।
लैंडर के पास यह क्षमता है कि वह चंद्रमा की उबड़-खाबड़ सतह में भी बड़ी सावधानी से उतर सकेगा और रोवर को बाहर लाने के लिए और संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होगा। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में कुल 6 नितभार हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसे शॉर्ट में रंभा कहा जाता है, यह चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा के घनत्व तथा समय के साथ बदलाव का मापन करेगा। इसके बाद चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा के ध्रुवीय सतह के आसपास की थर्मल प्रॉपर्टीज का मापन करेगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र में भूकंप जैसी गतिविधियों का पता लगाएगा। रोवर में चंद्रमा की सतह के तत्वात्मक विश्लेषण के लिए लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक निर्धार है शेप स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो कि चंद्रमा से पृथ्वी से परावर्तित नियर इंफ्रारेड किरणों का विश्लेषण दूसरे जीवन सहायक ग्रहों को खोजने में मदद करेगा। वर्तमान में C-25 इंजन कार्यरत है और पूर्णतः सामान्य प्रदर्शन कर रहा है। अब हम प्रमोशन से 700 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। सापेक्ष गति 6.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई 191 किलोमीटर। As we three's upgrades in the aspects of enhanced robustness through extensive ground tests and simulation. During the last phase of landing, the module will have a vertical velocity of less than 1 meter per second and a horizontal velocity of less than 0.5 meters per second from a height of 3 meters. The lander legs are designed to be robust enough to drive the impact. The cameras are tuned to take pictures ahead of the landing and enable intelligent decision-making for choice of best location to land, avoiding craters and boulders on lunar surface. The successive pictures will also enable the craft to determine its horizontal and vertical velocity in real time. Laser Doppler velocity sensor is an upgrade in Chandrayaan 3 over its predecessor. It helps to determine instantaneous velocity of craft. Insights into the behavior of Chandrayaan 2 in the last few minutes of its descent has revealed to the scientists the necessity for upgrade in the guidance algorithm. Inputs from various sensors are used by the autonomous navigation guidance algorithm of Chandrayaan 3 to plan the flight path to the most suitable landing spot. The engines of Chandrayaan 3 are capable of more gradual throttling also. वर्तमान में हम प्रमोशन से 817 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। करीब 950 सेकंड पर तृतीय चरण क्रायोजेनिक इंजन को शट ऑफ कर दिया जाएगा। और उचित अभिवृद्धि प्राप्त कर चंद्रयान 3 को यान से पृथक कर दिया जाएगा। चंद्रयान 3 को LVM 3M4 द्वारा एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में लॉन्च करने के पश्चात 170 किलोमीटर की पेरिजी पर क्रमशः 5 बार मैन्यूवरिंग कमांड दिया जाएगा। 5वीं बार में यह पृथ्वी से चंद्रमा की ओर प्रस्थान करेगा, जिसे हम ल्यूनर ट्रांसफर ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। कक्षा में प्रवेश करेगा और फिर क्रमशः 5 मैन्यूवरिंग के पश्चात प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित हो जाएगा। यहाँ यह उचित समय और अभिवृद्धि में लैंडर मॉड्यूल को पृथक करेगा और 23 अक्टूबर 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
plus 15 minutes. We have come close to 900 seconds after the launch. Currently, the C-25 stage is thrusting. Current relative velocity is 9.29 kilometers per second. जी हाँ, कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण LVM 3 M4 रॉकेट का चंद्रयान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है और उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त होते ही और उचित अभिवृद्धि प्राप्त होते ही चंद्रयान 3 को अंतक्षेपित कर दिया जाएगा। Cryo stage thrust cutoff. Satellite injection condition is achieved. अभी पुष्टि की गई चंद्रयान 3 को प्रमोचन की कक्षा प्राप्त कर ली गई है। Chandrayaan 3 satellite separated. चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट पर। Chandrayaan 3 has attained a major milestone LVM 3 successfully. M4 Chandrayaan 3 mission accomplished. Handing over to mission director. This is mission director. The LVM 3 M4 Chandrayaan mission accomplished its precise satellite injection conditions. LVM 3 M4 mission is successful. Jai Hind. The launch has also added a feather in the cap of LVM 3 rocket. You can watch the jubilant congratulatory gestures of ISRO scientists in the mission control center. जी हाँ, चंद्रयान को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है, लेकिन चंद्रयान 3 की यात्रा अभी जारी है। अब इस मिशन के बारे में हम अध्यक्ष महोदय से सुनेंगे और हम आपसे आज्ञा लेते हैं। We sign off. नमस्कार। Up next is address by Secretary DOS, Chairman ISRO. तो ये आपको तस्वीरें हमने दिखाई यहाँ पर जो पहला चरण है यहाँ पर चंद्रयान 3 का वो सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और अब ये जो यात्रा है चांद की तरफ होगी चंद्रयान की। और Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM 3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometers was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. Before that, let me introduce the team behind this mission, the mission director, Mr. Mohan Kumar, and also the project director of LVM 3. And we have also the mission director for the Chandrayaan 3 craft, the project director of Chandrayaan 3, Veera Muthuvel. So over to them, Mohan. Thank you, sir. Honorable Minister of State for Science and Technology and Departments of Space and Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman ISRO and Secretary Department of Space, former secretaries of the department, invited dignitaries, respected dignitaries and invitees, I am very happy to report here that the LVM 3 M4 vehicle has injected the Chandrayaan 3 satellite to the precise orbit, and once again the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. I would like to appraise three things here. The vehicle systems are in the
continuous process of quality improvement, especially in the event of our human rating efforts towards making the systems reliable. Secondly, the payload also, capability of the payload also is improved by mission strategies as well as vehicle engineering approaches. We are in the process of increasing the launch frequency of this vehicle considering the national requirements as well as satellite demands. Here, so many improvements we have incorporated in this vehicle. For example, the S200 nozzle, they are processed exactly as per the human rating standards, enabling us to have 100% NDT, and the inherent pocket erosion characteristics are removed. The L100 stage Vikas engine, mostly it is 100% qualified to be the human rated engine with indigenously developed LET throats, and the pocket, the back wall gas entry also is eliminated, and it is a perfect system. Yes, and the CE20 stage also is perfectly, actually, sir. Good. So we will describe all those details later because of shortage of time. Yes, sir. I take this opportunity to thank all the mission executives because mission executives for all the supports all along the launch campaign process as well as the launch. Once the launch manifest is released and mission executives are identified, really this is a penance of so many across the ISRO centers, our launch vehicle centers, VSSC, LPSC, IPRC, IASU, SDSC, SHAR, URSC and SAC, along with all our industrial partners, major players to the small-scale industries who supply us with all the deliverables in time, quality products, the suppliers of chemicals, propellant ingredients, suppliers of avionics systems, and our own GOCO facility operators. Actually, the industrial manpower is really our ISRO's virtual manpower. Everybody's efforts went into this, and also the prayers and best wishes of all our seniors, retired executives, everyone's prayers and our own family members. I take this opportunity to pray God Almighty for all the blessings in the form of this success, which was the penance by the ISRO family for last 73 days. And my prayerful pranams for the successful continuous operations of the Chandrayaan spacecraft, for its safe and soft landing on lunar surface and further experiments. Thank you. Jai Hind. Respected Chairman ISRO, Center Directors, dignitaries and my team Chandrayaan 3, very happy to note that our Chandrayaan 3 has been injected into an intended orbit with very close orbital parameters. Congratulations and thanks to LVM 3 team. And all our spacecraft health parameters are normal, including the power generations in both propulsion module and lander module. Our journey to moon has begun now for the most awaited soft landing. We'll be closely monitoring and controlling the spacecraft from ISRAC Bangalore. Many critical events are lined up, starting from earthbound maneuvers, insertion into the lunar orbit, and separation of lander, and set of deboost maneuvers, and finally the power descent phase for a soft landing. I take this opportunity to thank Chairman ISRO, Director URSC, and all the center directors for entrusting me this opportunity, who have been the motivational and guidance force behind this mission. My special thanks to Chandrayaan 3 project executives, Associate Project Director Kalpana, Deputy Project Directors, Project Managers across the ISRO centers who have provided an excellent support in building the spacecraft. My special thanks to the expert committees for their constant guidance throughout the various stages of the project. I also thank the various work centers and industries who have contributed directly and indirectly to this mission. My special thanks to URSC council members, group directors, deputy directors across the ISRO centers, and looking forward for the soft landing with all your wishes and blessings from the God. Thank you. We have our Honorable Minister for Space,
Minister of State for Space, Dr. Jitendra Singh ji, amongst us during this historic occasion of success of launching of LVM3. So we would like to hear a few words from him. Over to you, sir. It is indeed a moment of glory for India and a moment of destiny for all of us over here at Sriharikota who are a part of the history in making. Thank you, Team ISRO, for making India proud. And thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. You would recall, Honorable Prime Minister had very recently said, sky is not the limit. And living by his words, I think the Chandrayaan today has gone beyond the limits of sky to discover the unexplored horizons of the universe beyond. Ladies and gentlemen, this day today, the 14th of July 2023, is also a day of vindication. Vindication of the dream that Vikram Sarabhai saw 6 decades ago. He might have been short of resources, but never short of confidence. And when we see those pictures of a launcher vehicle being carried on the carriage of a bicycle, without any remorse, without any slightest embarrassment, that is because Vikram and his team had faith in themselves, faith in India's potential, faith in India's acumen. And today, here, we are vindicating and we are reiterating India's indigenous capabilities, living up to the ideal of Atmanirbhar Bharat. And before I conclude, ladies and gentlemen, as Mother India enters into the next 25 years of this Amrit Kal, she pledges to play a leading global role in the emerging world scenario of 21st century. Thank you and congratulations once again. Thank you, sir. We will also introduce the directors of the centers who have done all those great work of building the rocket, building the scientific instruments for Chandrayaan-3, the Chandrayaan spacecraft itself, and made all those critical systems, and also the agencies who are going to handle the rest of the mission part, the tracking and the ground stations, and all those teams are here. So I request the directors of those centers to join. First, Director of Vikram Sarabhai Space Center. Good afternoon, India. In last 1 year, this is the 10th mission, including the precise landing of the reusable launch vehicle. So with this mission, this is the 7th mission of LVM3, the successful mission. With this, the success rate of LVM3 is 100%. And this is the ideal vehicle for Gaganyaan. Some of the changes that we are incorporating in Gaganyaan, we have implemented here. And the Mark III has crossed the reliability of 0.9 and inching forward. So I take this opportunity to salute the entire ISRO community, especially the VSC community and all launch vehicle centers, industry partners for making the stages, making the sub-assemblies and testing. In fact, this is the 3rd launch of LVM3 in 1 year. You know, the realizing the stages, assembling, testing, and then launching 3 LVM3s in 1 year is a Herculean task. I salute the industry as well as all the ISRO centers for this. And I wish all the very best. We know that when the beginning is good, the ending has to be good. I wish all the very best to the Chandrayaan for its solitary journey through the vastness of space and for making a feather-like soft landing in the 4th week of August. Good luck. Thank you.
Dr. Narayanan, Director LPSC. Good afternoon to all of you. It is a historical event for Indian space program and a proud moment for all the Indians across the globe on this momentous occasion of the successful launch of the Chandrayaan-3. 3-in-1 spacecraft in the required orbit with the highest level of precision by our heaviest launch vehicle, LVM-3. After the 2 launches of LVM-3 vehicle this year, this vehicle is realized in the record shortest time. Today, once again, all the vehicle systems have performed, demonstrated the 7th successful launch. As you all know, the entire spacecraft community has put wholehearted effort during last 4 years, and we have realized a marvelous, great scientific satellite. For this mission, the entire vehicle performance is as expected, as predicted. In fact, the precision in which the satellite is launched shows the reliability of this vehicle. And we too have 4 liquid propulsion modules, 2 in the launch vehicle. The L110 stage, C25 stage, it has performed extremely well along with all other vehicle systems. We too have 2 more propulsion modules, one for taking the spacecraft to the moon, another one for soft landing. I think it is already well integrated, the system health is very good. Today's success is the culmination of the dedicated, smart and hard work of all the ISRO team members and the work culture of ISRO and the review process what we follow. I am sure all further mission operations will be a grand success and we'll have the successful soft landing. On this occasion, let me congratulate and compliment the members of ISRO team, our family members who have really sacrificed, the partners from industry and academia, and the various review fora. Thank you. Jai Hind. The Chandrayaan craft was built at the URO Satellite Center, so I request the Director of URC to speak. Good afternoon, ladies and gentlemen. I take this opportunity to first thank my colleagues from the Launch Vehicle Center for providing a textbook-like launch for Chandrayaan-3 on its journey towards moon. Thank you very much. And as Director LPSC and Director VSSC mentioned, realizing this kind of launch vehicle, 3rd launch vehicle within a year's time is indeed a Herculean task. And thank you very much for the effort that has been put by all the members of the launch vehicle community and the industry supporting them. Coming to Chandrayaan-3, Mohan was telling that it is a penance. In fact, it is a penance of the Chandrayaan-3 team for the last 4 years, which has come today as an outcome. It is sitting like a brain sitting inside the head of a human being on that mighty vehicle. On top of that, that satellite was sitting, and it was such a happy moment to see that satellite getting separated. And our work continues from now for the next 42 days till we reach the lunar orbit and touchdown softly on moon. So we'll speak the rest of the things after the soft landing on top of moon. Till then, thank you very much for all the members of the satellite community and the industry for your support, which has been continuing over several years, and I'm sure will continue in future also. Thank you very much. Space Applications Center Ahmedabad plays very important role in our scientific instruments and building of the satellites. Over to Director SAC, Nilesh Desai. Thank you. Good afternoon, everybody. At the outset, let me compliment Team ISRO for this excellent work. तो ये आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है इस मिशन के बारे में जो इसरो ने चंद्रयान-3 के लॉन्च को जो है सक्सेसफुली यहाँ पर पूरा किया है। अब लॉन्च यहाँ पर पूरा हो गया है, अब आगे के चरणों की तरफ जो है वो बढ़ा जाएगा
और अगले 42 दिनों में ये चंद्रमा की कक्षा में जो है वो पहुंचेगा चंद्रयान 3, और वहां पर लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। जो दक्षिणी ध्रुव है चांद का, वहां पर उतारने की कोशिश होगी चंद्रयान 3 को, और वहां से उम्मीद की जा रही है कि बहुत सारी जानकारियां जो है वो हम जुटा पाएंगे इस मिशन के जरिए। पिछली बार का जो चंद्रयान 2 मिशन था उससे कई सारी चीज़ें जो है इसमें बदली गई हैं और बेहतर इसको किया गया है, और इस बार सफल लैंडिंग की उम्मीद की जा रही है, जो अब से 40-42 दिन बाद इसकी उम्मीद की जा रही है। इस पर और चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डी रघुनंदन जी हमारे साथ हैं। सर, हम ये देख रहे थे अभी इसरो की तरफ से बताया जा रहा था पहला चरण जो है वो तो यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया है, अब पृथ्वी की कक्षा में ये पहुंच गया है। इसके आगे के चरणों को थोड़ा आप समझाइए, कितना वक्त यहाँ से लगेगा आगे चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने में? अभी ये पृथ्वी की कक्षा में है। ये कक्षा के बारे में समझना थोड़ा जरूरी है। ये कक्षा जो है ये गोलाकार नहीं है, ये अंडाकार कक्षा है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है, और बहुत ही खींचा हुआ एलिप्स है इसका। यानी कि पृथ्वी और उपग्रह के बीच में सबसे कम जो ऊंचाई है उपग्रह का वो है 170 किलोमीटर, और सबसे ज्यादा जो ऊंचाई है वो 36,500 किलोमीटर। यानी एक बहुत लंबा सा रास्ता है जो जाएगा और फिर छोटे होके वो साइड से आएगा। तो इस कक्षा को धीरे धीरे अब अगले कुछ दिनों में ये जो 36,500 का है इसको बढ़ाया जाएगा, 50,000, फिर 80,000, ऐसे ऊंचा करते करते जब तक वो चंद्रमा की ग्रेविटी के नजदीक आ जाए और चंद्रमा उसको अपने कक्षा में ले ले, तब उसके बाद वो चंद्रमा की कक्षा में वो अपना परिक्रमा करेगा। तो ये तरीका है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्लिंग शॉट मैनूवर। जैसे कि एक पत्थर को हम घुमा के फेंकते हैं, वो धीरे धीरे उसी रफ्तार से वो आगे जाता है, वैसे इस उपग्रह को स्पीड इसका बढ़ता है, क्योंकि ये इसकी जो अंडाकार जो कक्षा है, जो इसका परिक्रमा मतलब सर अभी पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा ये करेगा और परिक्रमा इसके करेगा, बाद पर इस परिक्रमा को लंबा करते करते हाँ। वो चंद्रमा तक इसको और पहुंचाएगा। इसको हम प्रोपल्शन मॉड्यूल कहते हैं कि यहाँ पर अभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके फिर वो चंद्रमा से जब कम दूरी जहां पर बचेगी वहां से वो उसमें शिफ्ट करेगा। लेकिन ये कैसे काम करता है ये भी थोड़ा समझाइए दर्शकों, क्योंकि जो हमने वो देखा LMV-3 देखा जिसने पृथ्वी कक्षा तक इसको पहुंचाया, उसके ज्यादातर हिस्से तो वहीं पर अलग हो जाते हैं। तो उसके आगे की जो ये प्रक्रिया होती है ये कैसे फिर आगे बढ़ता है यहाँ से? तो प्रोपल्शन मॉड्यूल के अंदर भी रॉकेट इंजन होते हैं, और वो रॉकेट इंजन इसको आगे इसका रफ्तार बढ़ाएगा और पृथ्वी से इसकी दूरी जो है वो बढ़ाता जाएगा। इसकी 4-5 कक्षा में ये बढ़ता जाएगा जब तक वो चंद्रमा के आसपास पहुंच जाए। जब वो चंद्रमा के आसपास पहुंच जाएगा तो उसके बाद वो चंद्रमा के परिक्रमा में आके वहां पे घूमेगा। फिर ये जो रॉकेट है जो प्रोपल्शन मॉड्यूल के अंदर है, जो इंजन है, वो इसको चंद्रमा के इर्द गिर्द का जो परिक्रमा है उसकी साइज को धीरे धीरे कम करेगा। पहले तो लंबा होगा, फिर इसको छोटा करते करते 100 किलोमीटर की ऊंचाई के दूरी पे ले आएगा चंद्रमा के इर्द गिर्द। ये सब उसके अंदर जो रॉकेट के इंजन है उसके से होगा। फिर उसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल अपने रॉकेट को कंट्रोल करते हुए जो लैंडर है उसको छोड़ेगा चंद्रमा के ऊपर। फिर लैंडर का काम आता है, उसके अंदर भी रॉकेट के इंजन होते हैं, और वो रॉकेट के इंजन उसको गिराया जाएगा जब प्रोपल्शन मॉड्यूल से, तब वो चंद्रमा के ऊपर उतरने की कोशिश करेगा और धीरे धीरे अपने रफ्तार को कम करते हुए उतरेगा, ताकि वो सॉफ्ट लैंडिंग जिसे हम कह रहे हैं। ये क्या डिफिकल्ट प्रोसेस होता है क्या सर लैंडिंग में रफ्तार को कम करना? क्योंकि पिछली बार शायद यहीं पर दिक्कत आई थी। बिल्कुल, 2 चीजें थी जो पिछली बार दिक्कत की थी। एक तो अपने स्पीड को, अपनी रफ्तार को ये कम करना था उसको। दूसरा है कि नीचे देखते हुए कौन से स्थान में उतरना है
भी आपको ठीक से उसको देखना पड़ेगा। और जैसे पहले समझाया जा रहा था, पृथ्वी से उसका कोई सिग्नल नहीं होगा। ये उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसी को देख के उसको जज करते हुए लैंडर अपनी जगह पे जहां लैंड करना है वो आएगा, एडजस्टमेंट करेगा। पिछली बार क्या हुआ, एक तो रफ्तार ज्यादा था उसका, रफ्तार ज्यादा होने के वजह से उसकी जो अपनी गाइडेंस सिस्टम कहते हैं, जो उसको देखते हुए रफ्तार को भी ठीक करेगा, दिशा को भी ठीक करेगा, रफ्तार ज्यादा था तो इसको ठीक करने की कोशिश में वो गड़बड़ा गया, क्योंकि एक चीज ज्यादा थी रफ्तार, तो वो अपने आप को एडजस्ट करने में वो असफल रहा। तो अब की बार इन्होंने एक तो रॉकेट एक इंजन निकाल दिया ताकि रफ्तार पे थोड़ा और कंट्रोल करें, और दूसरा जहां उसको उतरना है, पहले उसको बहुत छोटी एक एरिया दिया था, 500 मीटर के अंदर आपको लैंड करना है, तो वो बहुत ही छोटा था, उसके अंदर उसको कंट्रोल करते हुए आने में दिक्कत पड़ी थी। अब उसको थोड़ा सा और स्पेस दिया है और जगह दी है, तकरीबन 4-1 किलोमीटर की दूरी के अंदर वो लैंड करे तो उसको आसान होगा, इतना टाइट कंट्रोल उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी को वो कह रहे थे कि वो था सेफ डिजाइन और ये है फेलियर बेस्ड डिजाइन, यानी कि कहाँ गलती हो सकती है उसको सुधारने के लिए उसको और ताकत दिया है इस सिस्टम को, जो उसको कंट्रोल करता है नीचे उतरने के टाइम पे। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया रघुनंदन सर कि कैसे ये प्रोसेस जो है पूरा आगे बढ़ता है।